Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this short video, I want to talk to you guys directly about some of the comments and the feedback you guys were providing me with. Firstly, thank you so much for watching all the videos that I'm posting and leaving comments and appreciating this small effort. तो बात ये है कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि लीगल सिस्टम्स एंड मेथड्स की भी वीडियो बनाई जाएं, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं प्रेसिडेंट, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और जुडिशरी, उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियोस मैं बना रहा हूँ. पब्लिक लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए शायद वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर दिस एकेडमिक ईयर. मोस्ट लाइकली समर्स के अंदर आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल. जहाँ तक लेवल 5 की बात है तो डेफिनेटली आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द सीरीज़ ऑन प्रॉपर्टी लॉ एज वेल. EU लॉ को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, सो यू कैन डेफिनेटली एंटिसिपेट दैट. As far as level 6 is concerned, jurisprudence और इक्विटी एंड ट्रस्ट, इस साल का वो फोकस है. डेफिनेटली अगर आप लोग उन दो एरियाज़ को एंटिसिपेट कर रहे हो तो आप इस पे रिलाई कर सकते हो. इसके साथ साथ मैं एक और बड़ी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाह रहा था वो है पास पेपर्स. एक मेजर कंसर्न ये आता है कि जी हमें टॉपिक समझ आ गया हुआ है, वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट वी डोंट नो हाउ टू स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम. And so I'm going to make specific videos about scoring well in the exam, about how to attempt a problem question कि problem question के किस तरह से आपने parts address करने हैं, facts और law को कैसे साथ लेके चलना है. तो there will be separate videos on all the subjects जिनके लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ कि उसके मैं प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी आपको करना सिखाऊं और उसके साथ साथ एक एनालिटिकल ऐसे लिखना सिखाऊं. सो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम लोग मोस्टली डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं. डिस्क्रिप्टिव यानी कि हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि उस एरिया में लॉ है क्या. जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या जितनी भी आपके लॉ प्रोग्राम्स यूके बेस्ड हैं, दे एक्सपेक्ट एन ऐसे क्वेश्चन इन मोर एनालिटिकल फैशन, बिकॉज जो उनका स्टडी स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन इस तरह हुआ है कि वो आपके क्रिटिकल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं. और क्रिटिकल स्किल्स डेवलप ही तब होते हैं जब आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है और कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल ऑन स्पॉट क्लियर होते हैं. सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट एन एनालिटिकल एसे फ्रॉम पैरा 1 टू पैरा 5th और 6th, और कितने वर्ड लिमिट का होना चाहिए, वर्ड काउंट क्या होना चाहिए, किस तरह से आप ऑथर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, रिसर्च को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी स्मार्ट एज वेल. सो स्मार्ट स्टडी में जो आपके रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है. ना सिर्फ इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है बल्कि आपने प्लेजरिज्म और जो एआई का इशू आता है उससे उसको कैसे अवॉइड करना है. I'm definitely going to advise you on that as well. So I just wanted to, have a short video to discuss these few plans that I have. इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि the channel will have more information with regards to career pathways. I'm going to invite some of my friends in the discussion discourse to explain the concepts through immigration of lawyers if you want to, go abroad. um, if you want to take admission in the LLM program, in the Bar at Law program, what options do you have after this degree? तो उसके बारे में बातचीत होगी. कुछ पाकिस्तानी लॉ से रिलेटेड भी बात हम लोग करेंगे definitely in the summer, where I will be explaining more things about GAT law, C law exams and licensing exams जो कि पाकिस्तान में इस वक्त required हैं in order to get the enrollment as an advocate. So uh, thank you very much guys for being with me on the channel, and if you have some special requests that you want me to address, you want me to make a video on, definitely do leave a comment. As I said, I read almost every comment that you are posting. So just wanted to quickly come and thank you guys for the overwhelming response that you are giving me. Thank you very much.